children, how are you? I hope you all are doing well. Are you practicing how to read and are you practicing how to write different things in English? Very good children, because that will enhance your English knowledge. Okay, so children, today we are going to read this chapter. Okay, the name of the chapter is Gogol's Story. So tell me one thing children, do you have any other name apart from the name that has been kept for you by your parents? क्या आपका घर में कोई पेट नेम है जो आप यूज़ करते हो और जो आपको बहुत पसंद है? सो ऐसे ही गोगोल करके एक लड़का है जिसका एक नाम है, बट उसको स्कूल जाता है तो उसके पेरेंट्स बोलते कोई और नाम यूज़ करना है. So let's read this story and see what has happened with Gogol. Okay, so the prologue says Gogol Ganguly is a young Bengali boy who lives in America. He starts going to school for the first time. His parents Ashok and Ashima tell him that he will be called Nikhil when he is in school. Gogol has never been called Nikhil before and he cannot understand why his parents have made this decision. So, गोगोल गांगुली जो है वो अमेरिका में रहता है और जब वो स्कूल जाने लगता है तो उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं कि स्कूल में उसका नाम होगा निखिल. अब उसको निखिल नाम की तो आदत ही नहीं है. So let's see what happens when he goes to school. Okay, so now before we proceed to read this story, let's do a warm up. Do you like your name? If not, would you like to change it? What would it be? Explain why. So बच्चों, क्या आपको अपना नाम पसंद है? और अगर नहीं पसंद तो आपको कौन सा नया नाम चाहिए और क्यों? बताओ. And discuss this with your friends and your teacher also. Okay, so now let's read the story. Gogol doesn't want a new name. He can't understand why he has to answer to anything else. Why do I have to have a new name? He asks his parents, tears springing to his eyes. It would be one thing if only his parents were to call him Nikhil. But they tell him that his new name will be used by teachers and children at school. He is afraid to be Nikhil, someone he doesn't know and who doesn't know him. So बच्चों, जब हमारे पेरेंट्स हमारा नाम रखते हैं तो हमें उसकी इतनी आदत हो जाती है कि हमें अगर कोई दूसरे नाम से बुलाता है, सो वी डोंट लाइक, ओके, वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट न्यू नेम. दैट इज़ व्हाट इज़ द केस विथ गोगोल हियर. उसका नाम तो उसके पेरेंट्स ने गोगोल रखा था, बट जब वो स्कूल जाने लगता है तो उसको कहते हैं कि उसका नया नाम होगा निखिल. So he is like worried, he is crying कि why do I have to be addressed by someone in a different name altogether, okay, with a different name. तो वो सोच रहा है, वो अपने पेरेंट्स से पूछता है तो कहते कि स्कूल की जो टीचर्स है, बाकी बच्चे हैं, वो तुम्हें उस नाम से बुलाएंगे निखिल करके, घर वाले तो तुम्हें गोगोल करके ही बुलाएंगे. Okay, his parents tell him that each of them has two names too, as do all their Bengali friends in America and all their relatives in Calcutta. Now it is called Kolkata, okay? It's a part of growing up, they tell him, part of being Bengali. They write it for him on a sheet of paper and ask him to copy it over 10 times. Don't worry, his father says, to me and your mother, you will never be anyone but Gogol. So उसके पेरेंट्स उसको समझाते हैं कि हर बंगाली के पास दो नाम होते. Okay, this is very common with Bengalis, is what his parents are telling him. कि सबके दो नाम होते हैं, तो डोंट वरी, हम तो तुम्हें गोगोल करके ही बुलाएंगे. Okay, at school, Ashok and Gogol are greeted by the secretary, Mrs. McNabb, who asks Ashok to fill out a registration form. He provides a copy of Gogol's birth certificate and immunization record, which Mrs. McNabb puts in a folder along with the registration. This way, Mrs. McNabb says, leading them to the principal's office. The name on the door says, Candace Lapidus. Mrs. Lapidus is a tall, slender woman with short white blonde hair. She looks at the registration form and smiles kindly at the boy who is clutching his father's hand.
सो जब वो स्कूल जाते हैं तो सेक्रेटरी जो होती है मिसेस मैकना, शी ग्रीट्स देम, शी वेलकम्स देम टू द स्कूल. फिर उसके पापा को, गोगोल के पापा को एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है विच ही इज़ फिलिंग अप. ओके, और उसके साथ साथ वो उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगा देते. इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड, मतलब आप जो वैक्सीनेशंस लेते हो जब आप छोटे होते तब आपके पेरेंट्स ने आपको वैक्सीनेशंस दिए होंगे टू प्रिवेंट फ्रॉम द डिजीजेस. ओके, तो वो उसका एक सर्टिफिकेट होता है, उसका रिकॉर्ड होता है. तो उसके साथ साथ वो फॉर्म फिल करके उनको देते हैं. फिर वो द सेक्रेटरी टेक्स देम टू द प्रिंसिपल्स कैबिन. So now let's see what happens in the principal's cabin. Okay, the principal says, "Welcome to elementary school, Nikhil. I am your principal, Mrs. Lapidus." Okay, now she is introducing herself to Nikhil. Okay, मतलब अपना Gogol. Okay, so Gogol looks down at his sneakers. The way the principal pronounces his new name is different from the way his parents say it. The second part of it longer, sounding like heel. Okay, she bends down so that her face is level with his and puts her hand on his shoulder. Can you tell me how old you are, Nikhil? Okay, तो जब देखो हम जब इंग्लिश में बात करते हैं and when foreigners speak in English, they speak with an accent and the way they pronounce our name is always different. Okay, from how we pronounce each other's name. Okay, the pronunciation of Americans is different, the pronunciations of Britishers is different, so everybody has a different way of pronouncing things. So वैसे ही because he is in America, तो उसके प्रिंसिपल तो अमेरिकन है, तो जब वो उसको निखिल करके बुलाती है, so for him it sounds like Nikhil. Okay, so he is like wondering why is it sounding different from the way my parents address me and the way my parents have told me to. Okay, so when the question is repeated and there is still no response, Mrs. Lapidus asks, "Mr. Ganguly, does Nikhil follow English?" So उसने जब प्रिंसिपल ने पूछा निखिल से कि हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, ही डज नॉट रिप्लाई. तो जो प्रिंसिपल है, शी आस्क्ड मिस्टर गांगुली वेदर ही अंडरस्टैंड्स इंग्लिश और नॉट. ओके, तो ही सेज ऑफ कोर्स ही डज. अशोक सेज माय सन इज परफेक्टली bilingual, मतलब he understands Bengali as well as he understands English. In order to prove that Gogol knows English, Ashok does something he has never done before. He addresses his son in careful, accented English. "Go on, Gogol," he says. "Tell Mrs. Lapidus how old you are." "What was that?" Mrs. Lapidus says. "That name you called him. Something with a G." "Oh, that is what we call him at home only. But his good name should be is," he nods his head firmly, "Nikhil." Mrs. Lapidus frowns. "I am afraid I don't understand. Good name?" "Yes." Mrs. Lapidus studies the registration form. She has not had to go through this confusion with the other two Indian children in the school. She opens up the folder and examines the immunization record and the birth certificate. "There seems to be some confusion, Mr. Ganguly," she says. "According to these documents, your son's legal name is Gogol." सो क्या होता है जब वो पूछती है कि इसको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है, तो उसके पापा कहते हैं कि नहीं ही अंडरस्टैंड्स इंग्लिश वेरी वेल. एंड देन फिर उसके पापा उसको प्रिंसिपल के सामने गोगोल करके बुलाते हैं और पूछते हैं, "गोगोल, टेल हर दैट यू नो यू कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, ओके, एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ ओल्ड आर यू." सो द प्रिंसिपल उसने फॉर हर शी दैट नेम गोगोल इट कैचेस हर अटेंशन एंड देन शी सेज देयर इज सम कन्फ्यूजन. फिर वो उसका बर्थ सर्टिफिकेट चेक करती है, इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड चेक करती है और फिर वो उसके पापा से कहती है कि हिज लीगल नेम ओके इज गोगोल. बिकॉज प्रिंसिपल के पहले भी प्रिंसिपल के पास 2 इंडियन चिल्ड्रन आए थे, उनके साथ तो ये कन्फ्यूजन थी नहीं, बट यहाँ पे पापा कह रहे हैं निखिल और जो बर्थ सर्टिफिकेट है, इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड है, उसमें तो नाम है गोगोल. So now the principal is like trying to ask his father, what is this about? Okay, so she says that according to these documents, your son's legal name is Gogol. So he says that is correct, but please allow me to explain.
that you want us to call him Nikhil. That is correct. Mrs. Lapidus nods. The reason being, that is our wish. तो वो बोलता है कि let me explain. तो प्रिंसिपल कहते कि अच्छा you want us to call him Nikhil. So he says yes. तो प्रिंसिपल कहते क्यों? They say that is our wish. I'm not sure I follow you, Mr. Ganguly. Do you mean that Nikhil is a middle name or a nickname? Many of the children go by nicknames here. On this form, there is a space. No, it's not a middle name, Ashok says. He is beginning to lose patience. He has no middle name. The boy's good name, his school name is Nikhil. सो प्रिंसिपल उसको पूछती है कि क्या निखिल जो नाम है गोगोल का वो मिडिल नेम है या निक नेम है, क्योंकि हमारे पास वो प्रोविजंस भी हैं फॉर्म में जहाँ पे आप मिडिल नेम या निक नेम की जगह पे उसका नाम डाल सकते हो निखिल. तो कहते हैं नहीं, वी वांट हिज नेम टू बी निखिल. ओके, नाउ हिज फादर इज गेटिंग एंग्री. ओके, and he's losing his patience. So, but the principal, she's very confused. Okay, so he says, but Mrs. Lapidus presses her lips together and smiles. But clearly, he doesn't respond. तो जब Mrs. Lapidus जो होती है, she's very keen. Okay, she knows that the child is not responding. जब उसको निखिल करके बुला रहे हैं, वो respond ही नहीं कर रहा है. तो वो उसके पेरेंट्स को, उसके फादर को समझाने की कोशिश करे. Please, Mrs. Lapidus, Ashok says, it is very common for a child to be confused at first. I assure you, he will grow accustomed. He bends down and this time in Bengali, calmly and quietly, asks Gogol to please answer when Mrs. Lapidus asks a question. Don't be scared, Gogol, he says, raising his son's chin with his finger. You are a big boy now. तो अब जो अशोक जो है, he is very keen that Gogol responds to her whenever she addresses him as निखिल. तो इसकी वजह से वो प्रिंसिपल को कन्विंस करने को देख रहे और इसलिए वो गोगोल के पास जाते हैं, बेंड करके उसको बोलते हैं, बंगाली में उसको समझाते हैं कि मैम जो भी आपसे पूछेगी प्लीज़ रिस्पॉन्ड टू दैट. ओके, वो प्रिंसिपल को कहते हैं कि ये हर बच्चे के साथ होता है और धीरे धीरे उसको आदत लग जाएगी. तो वो गोगोल को बोलते हैं अभी आप बड़े बच्चे हो गए, यू आर अ बिग बॉय नाउ, सो प्लीज रिस्पॉन्ड टू द प्रिंसिपल. ओके, दो मिसेस लैपिडस डज नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड, she listens carefully and hears that name again, Gogol. Lightly in pencil, she writes it down on the registration form. Ashok hands over the lunch box and a windbreaker in case he get cold. Okay, he then thanks Mrs. Lapidus. Be good, Nikhil, he says in English. तो जो प्रिंसिपल होती है उसको लैंग्वेज में तो समझ में नहीं आती बिकॉज ही इज टॉकिंग टू हिम इन बंगाली, बट व्हाट शी डज इज ऑन द फॉर्म, ओके, शी मेंशंस द नेम गोगोल, ओके, विच हिज फादर इज नॉट अवेयर ऑफ. तो अभी फादर उसको लंच बॉक्स देते हैं और एक विंड ब्रेकर देते हैं बिकॉज उसको अगर कोल्ड कैच हो गया या कुछ हो गया तो ही कैन यूज दैट. ओके, एंड देन ही लीव्स फ्रॉम देयर एंड सेज बी गुड निखिल, he says in English. Okay, so bachcho, now let's track your performance by doing the my performance tracker. Let me see how much you followed the story so far. Okay, now let's move ahead. And then after a moment's hesitation, he is gone. When they are alone, Mrs. Lapidus asks, are you happy to be entering elementary school, Gogol? My parents want me to have another name in school. And what about you, Gogol? Do you want to be called by another name? After a pause, he shakes his head. Is that a no? He nods yes. So, फिर क्या होता है, जैसे पापा चले जाते हैं वहाँ से, मिसेस लैपिडस उसको पूछते हैं कि आर यू हैप्पी कि तुम अभी एलिमेंट्री स्कूल में आ गए हो, आर यू हैप्पी अबाउट इट, एंड शी एड्रेसेस हिम बाय द नेम गोगोल. ओके, तो वो कहता है कि नहीं, बट मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं किसी और नेम से पीपल कॉल मी इन स्कूल. सो वो कहती है, फिर उसको पूछती है कि व्हाट इज इट दैट यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए. तो वो थोड़े रुक के फिर वो पूछती है इज दैट अ नो. तो ही नॉट्स येस. सो देन इट्स सेटल. कैन यू राइट योर नेम ऑन दिस पीस ऑफ पेपर? Gogol picks up a pencil, grips it tightly and forms the letters of the only word he has learned so far to write from memory, getting the L,
backward due to nerves. What beautiful penmanship you have, Mrs. Lapidus says. She tears up the old registration form and asks Mrs. McNabb to type up a new one. Then she takes Gogol by the hand and they walk down a hallway with painted cement walls. So, फिर जब वो कहता है हाँ कि मुझे किसी और नाम से बुलाना मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे किसी और नाम से बुलाए. So she says okay done. तो वो उसको पूछती है लिखने के लिए कहती है उसका नाम. So he writes the name that he is accustomed to. उसको जिसकी आदत है वो वही नाम लिखता है. That is Gogol. और फिर वो दूसरा registration form fill करवा देती है and then she takes him to the school tour. Okay. So she opens a door and Gogol is introduced to his teacher, Miss Watkins, a woman with hair in 2 braids, wearing overalls and clogs. Inside the classroom, it's a small universe of nicknames. Andrew is Andy, Alexandra, Sandy, William, Billy, Elizabeth, Lizzie. It is nothing like the schooling Gogol's parents have known. Fountain pens and polished black shoes and notebooks and good names and sir or madam at a young age. So जैसे ही वो classroom में जाता है, there is Miss Watkins, okay? मतलब उसकी class teacher होती है Miss Watkins, okay? So वो देखता है कि इस class में सभी बच्चों के nicknames है, ओके और वो देखता है कि ये जो उसके पेरेंट्स ने जो स्कूल अटेंड की है और ये जो स्कूल है उसमें बहुत फ़र्क है, ओके ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ओके सो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डे he is sent home with a letter to his parents from Mrs. Lapidus explaining that due to their son's preference he will be known as Gogol at school. What about the parents' preference? Ashima and Ashok wonder, shaking their heads, okay, but since neither of them feel comfortable pressing the issue, they have no choice but to give in. So जब गोगोल स्कूल से घर जाता है तो प्रिंसिपल एक नोट भेजती है कि that he will be called Gogol. Okay, that is what he prefers. Okay, so that's the name that is going to be used in school. So, but उसके parents के choice का क्या? Okay, what do you think? Okay, then the parents have to give in. Okay, because the school is not ready to accept what they want. Okay, and so Gogol's education begins. At the top of sheets of scratchy, pale yellow paper, he writes out his pet name again and again, as well as the alphabets in capital and lowercase. He learns to add and subtract and to spell his first words. On the front covers of his textbooks, he writes his name in pencil. In art class, his favorite hour of the week, he carves his name with paper clips into the bottoms of clay cups and bowls. He pastes uncooked pasta onto cardboard and leaves his signature in fat brush strokes below paintings. So अभी जैसे जैसे education शुरू हो जाता है, okay, he starts writing his name everywhere, wherever it is possible, okay, like the top of the sheets, okay, yellow sheets के ऊपर, then he loves his art classes. तो उस time पे भी he carves his name with paper clips, okay, at the bottom of the clay cups. फिर उसके टेक्स्ट बुक के फ्रंट कवर पे ही लर्न्स टू ऐड सब्ट्रैक्ट, मतलब उसका पूरा एजुकेशन शुरू हो जाता है अच्छे से. ओके, डे आफ्टर डे ही ब्रिंग्स हिज क्रिएशंस होम टू आशिमा who hangs them proudly on the refrigerator door. Gogol G. He signs his work in the lower right corner as if there were a need to distinguish him from any other Gogol in the school. So जहाँ देखो सब जगह पे वो वही नाम लिखता है और एक एक जो क्रिएटिविटी होती है उसकी, जो चीज़ें वो बनाता है वो घर लेके आता है और उसकी मम्मी उसको फ्रिज पे लगा देती है. एंड शी प्राउडली हैंग्स देम, ओके, एज दो इट रिफ्लेक्ट्स दैट हाउ मच ही इज इन लव विथ हिज नेम. सो बच्चों, ऐसे ही इफ़ यू लव योर नेम, ओके, यू शुड थैंक योर पेरेंट्स फॉर अ ब्यूटिफुल नेम दैट यू हैव, ओके, बिकॉज बच्चों नाम ढूंढना ना ईजी काम नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है. एंड देन व्हेन यू हैव अ नेम एंड पीपल एड्रेस यू विद दैट नेम, इजंट इट अ प्राउड फीलिंग कि अच्छा लगता है आपको? दैट्स राइट चिल्ड्रन. सो नाउ क्विकली रीड द स्टोरी and do the back exercises, learn the important words also, and do practice a lot of dictation of the difficult words.